bending of cyclist. Since, note down, since the friction between the tire and the road is not so sufficient, friction between the tire and the road is not so sufficient which can provide the necessary centripetal force. The friction between the tire and the road is not so sufficient which can provide the necessary centripetal force for the safe turn, to a cyclist, So, for the safe turn, cyclist has to bend himself. To provide the necessary centripetal force. Suppose the cyclist bend himself at an angle theta. From the vertical. If R be the reaction, angle theta, if R be the reaction given by the road to the cyclist, then this reaction R will have the two components, R sin theta and R cos theta. Reaction will have the two components, R sin theta and R cos theta. R sin theta provides the necessary centripetal force, and R cos theta balances the weight, of the cyclist. Thus, R sin theta is equal to mv square upon R. And R cos theta is equal to mg. If we divide R sin theta upon R cos theta, that is tan theta, it is equal to mv square upon R upon mg. Cancelled out, that is v square upon gr. So theta is equal to tan inverse v square upon gr. This is the angle the cyclist has to bend himself according to the velocity. This is the angle at which the cyclist has to bend himself according to the velocity and the radius of curvature. And the safe velocity v is equal to root gr tan theta. यही हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। और एक पढ़ेंगे इसके बाद मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल।
सर्किल। Here, see this if a stone is tied here, see this diagram. If a stone, it has the initial velocity u. If at any instant here mg downward, ये एंगल थीटा है इस साइन पे, so it will have, it is theta circle also. mg cos theta here and mg sin theta. इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर mg cos थीटा, mg cos थीटा and mg sin थीटा. Here टेंशन is T. जब ये पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी v, velocity is v. Here this is particle at point P. Center is O. Here particle start from A. When it reaches to point P, suppose the word height reached, it is h. This height is h. Radius is r, so this is OP. इसको अगर n ले लें, ON, it is r minus h. डायग्राम पढ़े देखो, सी द डायग्राम क्लियरली कि अगर एक स्टोन को अगर बांध दिया जाए यहाँ पे, जब हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर हम कम वेलोसिटी प्रोवाइड करें, थोड़ा सा प्रोवाइड करें, तो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं, वर्टिकल सर्किल पे हम लोएस्ट पे कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें, हाउ मच वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट इट इज एबल टू कंप्लीट ए सर्किल, पूरा सर्किल में घूम जाए. तो यही चीज हमको देखना, व्हाट विल बी द लोएस्ट वेलोसिटी, व्हाट विल बी द हाईएस्ट वेलोसिटी, व्हाट शुड बी टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट. All these things we will calculate. So here, if a particle, if a stone is tied with a thread, and if the horizontal velocity provide u, at when the particle reaches at point P, then mg acts downward. mg will have the two components, mg cos theta and mg sin theta. ध्यान में रखना. विकास पंजाब नाम खत्म हो गया वीडियो कॉल नहीं देगा, उसको फ्लाइट मोड में डाल के करना चाहिए था, गड़बड़ हो गया. तो हो गया पंजाब चल रहा है गाड़ी हो रही है.